Hello everyone, good morning. Audio video clear achi? So hello everyone, I'm Sudipta Simran Ponda welcoming you all to Vedang teachings powered by Vedang Institute of Technology. Okay, tell me how are you everyone? केमिति सब अच्छा? First of all लिखि दियो. যদি आपण माने SSB TGT ପାଇଁ preparation करूछंती 1 year validity सहित 1499 आपण माने द्रोण बैच एनरोल करि परिबे एथिरे आपण मानकर आर्ट्स बैच भी अछि एथिरे आपणकर PCN भी अछि and CBZ भी अछि you can enroll any of batches then JTAT ପାଇଁ आपण माने प्रारंभ बैच नै परिबे एटा भी आपणकर 1 year validity सहित 1199 अछि संस्कृत बैच SSB TGT रो आपण माने सेटा को पेड क्लास प्रोवाइड करि परिबु छु हमें सेटा को भी आपण अवेल करि परिबे 1499 चलंतु देखिबा क्वेश्चन आंसर 8280532825 को कॉल करके आपण माने क्वेरी सॉल्व करि परिबे सुनील साहू वेरी गुड मॉर्निंग आसो जदि सिविल सर्विस पे प्रिपरेशन करछंती दीज आर द डिफरेंट बैचेस अधिकारी प्री मेंस ओनली ऑप्शनल ओनली लाइक आपण माने मेंस पेपर नै परिबे प्रीलिम नै परिबे बोथ हाइब्रिड स्लॉट नै परिबे सो दीज आर द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द बैचेस एंड हियर इज द हेल्पलाइन नंबर एंड देखंतु जदि प्री प्लस मेंस आपण माने अवेल करूछंती 12000 रे आपण माने प्रिपरेशन करि परिबे 1.5 ईयर एंड जदि वन डे एग्जामिनेशन पे आपण माने प्रिपरेशन करूछंती महापैक को एनरोल करंतु 4000 देकी 2 इयर्स ता वैलिडिटी भीतरे जेते वन डे एग्जामिनेशन आपनकर हबो ये कवर अप हे जीवो सबु वन डे एग्जामिनेशन कवर अप हबो महापैक ओके चलो तो फास्ट देखो कोन कहिची ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इंडिया रा क्लाइमेट कथा पचरिची एंड यदि क्लासिफिकेशन हमें देखुचे ताले इंडिया रा क्लाइमेट को हमें केमिति क्लासिफाई करूचे फर्स्ट कौन हम राइट आंसर मते कहि दिला मेडिटेरेनियन टाइप हबो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप हबो कॉन्टिनेंटल टाइप हबो और इक्वेटोरियल टाइप हबो को टाइप हबो क्विक गिव मी द आंसर हियर टाइप कौन यार हबो जदि हमें देखुचे इंडिया रा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग तार क्लाइमेट रा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग ताको हमें केमिति क्लासिफाई करिचे कोडा राइट आंसर हबो क्विक अरे आंसर दियो ऑप्शन बी ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप वेरी गुड सो राइट आंसर कौन एठी होचे आपनकर ना ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप व्हाई बिकॉज़ इंडिया रा क्लाइमेट हमें जानि जे डिफाइंड बाय द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स कोथि पई रीजन कोन ना रीजन इज द सीजनल रिवर्सल कोन नै मते देखो सीजनल रिवर्सल पई हुई आपनकर इन द समर हमें देखुचे मॉइस्चर लेडन हेकी थांती आपनकर विंड्स रे एंड जेते बेले से ब्लो करे फ्रॉम द सी टू लैंड ताको हमें कहूचे साउथ वेस्ट मॉनसून कोटा ना सी टू लैंड हेले ताको हमें कोन कहूचे ना साउथ वेस्ट मॉनसून एंड ये आस्तिला पर ही हमें कहूचे क्लाइमेट ताको चेंज होउची बोली कहूचे ना मते को समस्त को प्रणाम ओके तो मते खाली कुह ए जो ऑप्शन अछि मेडिटेरेनियन टाइप ता माने हमें कोन कहूचे ना ए क्लाइमेट माने कोन ये कैरेक्टराइज अछि केमिति ना टू टाइप्स गोटे होची वेट विंटर्स गोटे होची ड्राई समर्स मेडिटेरेनियन टाइप माने आपण माने को माइंड को आसीबो वेट विंटर्स एंड ड्राई समर तो ए टाइप रे आपनकर मेडिटेरेनियन को आपनकर क्लासिफाई करा जायछि जदि आपन को असला कॉन्टिनेंटल टाइप ताको आपण माने केमति जानले ये रेफर करिवो कोन ना टेंपरेचर डिफरेंस को सपोज बॉइलिंग हॉट समर्स एंड फ्रीजिंग विंटर्स तो ए कंडीशन को एजो व्हाइल हमें जानचे नॉर्दर्न इंडिया रेटा देखिया को मिले नॉर्दर्न इंडिया रो कॉन्टिनेंटल जदि हमें देखुचे फील्स लाइक कोन कॉन्टिनेंटल बट प्रेजेंट जदि हमें देखिबा इंडियन ओशन आपनकर कोठी अछि ना एपटे साउथ रे माने ईस्ट रे साउथ रे ताको हमें फील करि पारुचे बट ओशन सहित हमें रिलेट करिबा जदि ताको हमें देखिबा दैट इज द ड्राई वन बट समर जोठी अछि ताको हमें कहि परिबा फ्रीजिंग विंटर दैट मींस नॉर्दर्न कंडीशन को पळेबा सो एटा आपनकर कोन कॉन्टिनेंटल टाइप ता आपनकर कहा को नै कि हुए ना टेंपरेचर डिफरेंस को नै कि हुए इट्स बेस्ड ऑन द टेंपरेचर डिफरेंस जेमिति कि एग्जांपल आपण माने परिबे नॉर्थ टू साउथ जदि इक्वेटोरियल टाइप आपण मान को कहूची ता माने आपण माने कोन बुझिबे मनोज जय जगन्नाथ कोन होची ये
मते को इक्वेटोरियल टाइप हेले कोन कहि परिबो ना द क्लाइमेट स्टेज हॉट एंड रेनी all the year around with no dry season. Equatorial means कोन रहिबो ना always हमें ताको consider करिबा that have a rainy season and there is no dry season at all. So always rainy आपनकर provided थिबो, always rain थिबो, but there is no dry atmosphere or climatic condition जो थि नथिबो ताको हमें कहिबा that is the equatorial type. For example आपण माने कहिबे most of the India experiences several months of the dry weather between the monsoon seasons. Monsoon आसिला परे भी बहुत सारा हमरो स्टेट सेमिति अछंती जो माने एक्सपीरियंस करि पारनंदी रेन हमें ताको रिलेट करै परिबा. टेल मी yes or no. yes. अच्छा मते देखा कहिलो केबे त माने को माइंड को आसीची कि जो क्लाइमेट को आपण माने क्लासिफाई करूछंती दोज आर न्यू ऑलरेडी मटा आगु कहि सारथिली बट स्टिल दोज आर न्यू से माने को पई कहूची जते बेले आपण को माइंड को केबे आसीची कि क्लासिफिकेशन होउची क्लाइमेट को आपण माने को पचारा जाउची कोपेन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग इंडिया रो क्लाइमेट को डिस्क्राइब करो. दैट मींस कोन ना कोपेन जणे जियोलॉजी आपनकर जियोग्राफिस्ट थिले जे आपनकर क्लाइमेटोलॉजिस्ट थिले जे आपनकर कोन ना ब्रीफिंग करिसंती क्लाइमेट को इंडिया रो क्लाइमेट को टाइप रो डिस्क्राइब करिसंती क्लासिफाई करिसंती. तो अकॉर्डिंग टू द कोपेन और कोपेन बेस्ड हिज क्लासिफिकेशन ऑन व्हाट ना सम हमें कहि परिबा दैट इज द एम्पिरिकल डाटा. कोन द एम्पिरिकल डाटा रहउची सपोज स्पेसिफिकली हमें कहिबा से माने टू की फैक्टर्स को काउंट करिथिले टू की फैक्टर्स को से रखिथिले. व्हाट आर दोस मेनली कोन होची ना मीन मंथ टेंपरेचर मीन मंथली प्रेसिपिटेशन कोन होची एठी गोटे ऐड कर दोची सो दैट त माने टिके डिस्क्राइब कर दोची जानिबो. तो कोपेन आपण माने कर ये रहिला आपण माने कर कोन ना कोपेन क्लासिफिकेशन. ओके तो कोपेन अकॉर्डिंग आपण कर कोन हेतिला ना को टू टाइप्स रे डिवाइड करा जायथिला. फॉर एग्जांपल टू टाइप्स रे कोन ना दीटा की फैक्टर को नेकी. व्हाट आर दोस की फैक्टर्स ना वन इज द मीन मंथली टेंपरेचर. नंबर 1 आपण कर कोन होची ना मीन monthly temperature and another will be what na rainfall pattern. Rainfall pattern को हमें कौन कहि परिबा ना mean monthly precipitation. So here is the temperature and एठी आपनकर कोन हे जिवो ये ना precipitation. And precipitation first it is nothing but the rainfall pattern ताको हमें कहूची हना नै मते को and they use करूथिले कोन ना combination of capital letters and small letters. अच्छा capital letters आपण मान देखिथिबे सब बेले कोन ना AW एमिदे लेखा होउची ना नै मते को ताइति गोटे कैपिटल लेटर भी रहउची गोटे स्मॉल लेटर भी रहउची. व्हाट डज इट मीन यदि कैपिटल लेटर कहउची ताहाले हमें कहि परिबा कि दिस इज टू डिनोट द ब्रॉड क्लाइमेट ग्रुप. एठी जो कैपिटल लेटर आपण कर रहउची ये आपण कर डिनोट करिवा लागि जेते टाइप रा आपनकर होल ब्रॉड क्लाइमेट ग्रुप को क्लासिफाई करिबा पई एटी कैपिटल लेटर यूज करा जाय. व्हाट डज इट मीन बाय यूजिंग द स्मॉल लेटर कोथि पे यूज करा जाय किछि तो डिनोट करिया पई ना सीजन ऑफ ड्राइनेस और रेनफॉल पैटर्न कहिथिली एठी आपनकर गोटे होची टेंपरेचर जोटा कि आपनकर क्लाइमेट ग्रुप को कैपिटल लेटर स्मॉल होची प्रेसिपिटेशन दैट मींस रेनफॉल को नेकी दैट मींस कोन ना होल द सीजन आपनकर ड्राई रहिबो और रेन रहिबो. दैट मींस आपनकर डब्ल्यू कोन कहूची ना ड्राई सीजन्स और रेनफॉल इज देयर. ता अकॉर्डिंग आपनकर कोन करा गला ना गोटे कैपिटल गोटे स्मॉल लेटर को डिस्क्राइब करा जायछि. बट तांको अकॉर्डिंग कोन ना ए जो कैपिटल एंड स्मॉल को नै कि 8टा मेजर क्लाइमेटिक रीजन से इंडिया को डिवाइड कर देछंती. तब ताकू जदी हमें देखिबा अकॉर्डिंग टू हम जदी मैपिंग कर देछन से टोटल इंडिया टा को 8टा रीजन ने कोन कोन रखिसंती आपण माने भी जानिथिबे. नंबर 1 लेखो एठी नंबर 1 कोन कहिबी सुनि दिए द फेमस वन AMW कोन ना AMW होना नहीं एटे A कैपिटल MW स्मॉल दैट मींस कोन MW अपन को कोन कहबो ना रेन पैटर्न को दैट मींस कोन ना आइदर ड्राई रहिबो नले रेनफॉल रहिबो आइदर ड्राई सीजन रहिबो और रेनफॉल रहिबो स्मॉल टा ता माने एटी कोन रहउची ना ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होइला A फॉर कोन ना A फॉर होउची ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल monsoon and W for कौन कहबा ना ट्रॉपिकल monsoon short dry season. So याकू आमे रिलेट करूचे व्हाट ना AMW सहित जोठी आपनकर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जोटा आपण मान जानि संदी साउथ मुंबई हां ना ताकू रिलेट करै परिबे आपण माने तार क्लाइमेट होचे आपनकर AMW टाइप जोटा कि रिसीव करबा वेरी हेवी रेनफॉल ओवर 300 सेंटीमीटर रु भी अधिक जदि आउ गोटे कोन क्लासिफिकेशन सपोज ये गला 1 ये गला पुनी 2 ताकू हमें केमति रिलेट करबा ना सपोज AS लिखाई छि एटे तीनटा लेटर थिला आपण मान जानि देले M फॉर आपनकर मॉनसून हे गला W टा हम रिलेट करछे कोन शॉर्ट ड्राई सीजन मते को आपण माने W इज फॉर आपनकर पुनी अल्फाबेटिकली कोटा को कोन कुआ जाय सेटा भी आपन को जानिबा दरकार ए एस लिखा गला ता माने आपण माने कोन जानिबे ना ये ट्रॉपिकल साबन्ना ए फॉर ट्रॉपिकल साबन्ना आसी गला ता सहित ड्राई समर जोटा कि आपनकर कोठी करमंडल कोस्ट तमिलनाडु ताकू आपण माने रिलेट करिवे तो एंड सो ऑन ए टाइप रे आपनकर टोटल केतेटा अछि ना टोटल 8टा डिवीजन करि दैचंती कि नामर Koppen. The Koppen classification according to the पचारा गला क्वेश्चन बे according to Koppen classification केतेटा डिवीजन हेछि इंडिया रा क्लाइमेट को ताहाले 8 divisions are there for India's climate. एते कि रिलेट करै परिबे आपण माने yes or no को मते BSHW हैला आपण मानकर BWHW हैला जोटा कि ओनली हॉट डेजर्ट रे आपनकर BWHW आसीबो तो एंड सो ऑन आपण को मन रखिया को पड़िबो ओके एंड जो छोटो छोटो अछि ताको मन रखिया पड़िबो सपोज कोटा M लिखा होछि कोटा W लिखा होछि M फॉर द मानसून W फॉर द विंटर ड्राई सीजन स्मॉल S लिखा होछि फॉर द समर ड्राई सीजन यदि H लिखा होछि हॉट ओके यदि G लिखा होछि आपण मान जानि संदी गंगा टाइप्स ओके ताको हमें कहि परिया जोठी आपनकर हॉटेस्ट टेंपरेचर थिबो बिफोर द रेन टेंपरेचर हॉट थिबो बिफोर द रेन तो ताको हमें रिलेट करिकि मन रखि पारि ठीक अछि तो ए बला किछि जिंस आपन को ऐड करिया को पड़िबो Next question मते को the word monsoon is derived from the Arabic word मौसुमी मौसिम so which means मौसिम means कौन कहिला मते देखि बुझा गला किछि आईडिया आसी गला एबे मते को the word monsoon and its origin कोठु हेछि तो आपनकर monsoon means कोन मौसिम ता माने कोन क्लाउड की सीजन की रेन की विंड डायरेक्शन की तो माने कहि दोची मॉनसून ता आपनकर क्लाउड नै के आसीबनी मॉनसून आपनकर विंड डायरेक्शन को कहिबो नाही कहिबो की क्लाउड्स कहले हमें जानि जे क्लाउड्स आर पार्ट ऑफ द मॉनसून दिस इज नॉट एग्जैक्टली द होल मॉनसून हां की तो हाले हमें रिलेट कहा को करे परिबा ना द वन एंड ओनली सीजन कहा को रिलेट करेबा छ एठी हमें ना सीजन को रिलेट करई परिबा because the Arabic word जो मौसम लिखा है literally तारा means ही हो जे season and it refers to the seasonal winds that sailors once used to navigate in the Indian Ocean or any kind of ocean. Okay, चलो next question. मते को which latitude passes through the middle of India influencing its climate? Middle of India रे आपनकर गोटे कोन लाइन पास करूची जो latitude पास करूची ताको हमें कोन कहि परिबा क्विक latitude माने लेट टिकी अछि ह ना दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन सो याकू हमें कोन कहि परिबा क्विक ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेरी गुड दैट मींस इक्वेटर कहले हमें कोन कहि पाछे पास थ्रू करिछि इंडिया रा कोनसी आपनकर स्टेट को पास थ्रू करिछि कि मालदीव देई कि आपनकर पास करछि नियर द मालदीव हमें कहि परिबा पास करिछि साउथ इंडिया रे एंड इट मेक्स द साउथ इंडिया हॉट क्लियर सो इक्वेटर हमर कोठी ना साउथ इंडिया मालदीव्स को आपण माने रिलेट करई पारिबे ता पाखरे देई कि जाई छी देन आपनकर रहला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर को हमें कहूचे पासिंग थ्रू द ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका इंडिया रे आपनकर पार्ट नाही ये आपनकर कोथरे पळेबो ना साउदर्न हेमिस्फीयर रे क्लियर जदि आर्कटिक सर्कल आपण मान को कहूची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपण मान जानि संदी 23.5 डिग्री नॉर्थ देई कि आपनकर कोन पास करिछि जदि पछरा गला केते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया रे लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ सॉरी 23 डिग्री 5 मिनिट नॉर्थ रे आपनकर पास करिछि इज दैट क्लियर इफ आर्कटिक सर्कल पछरा गला अंटार्कटिक कोटा त माने कहि देछि अंटार्कटिक कहले त माने साउथ को जीवो आर्कटिक कहले त माने ऊपर को जीवो दैट मींस कोन ना नॉर्थ को पळेबो नॉर्थ पोल को पळेबो ह ना नहीं एठी आपनकर इंडिया रे किछि रोल ही नाही ये नॉर्थ पोल हे गेले आर्कटिक यदि सेम आपनकर अंटार्कटिक पछरी थांता ये आपनकर टोटल साउथ पोल नॉर्थ एंड साउथ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक क्लियर
नेक्स्ट मते को अक्टोबर हीट इज कॉज्ड बाय अक्टोबर आपनकर हीट वेव आसी जाए हां बहुत ताती हुए हम कोन झांजी पिटे बट एटा कोथि पई हुए absence of rain अक्टोबर absence of rain हमें कहि परिबा कि रेन आपनकर डिक्रीज हे जाई थाए while we know rain decreases but the heat is specifically about how weather feels uncomfortable not just the lack of water that means it आपनकर absence of rain ର କିଛି relation ही नहीं when there is no rain we can't say that the weather is not in wet condition जदि रेन नाही ता माने हमें कहबा कि वेट कंडीशन मॉइस्चर को भी डिपेंड करस त मॉइस्चर आपनकर कोउठ अछि टेंपरेचर ग्रेडिएंट रो हमें ताको फॉलो करि परिबा दैट मींस दिस इज डिपेंड अपॉन द हाई टेंपरेचर एसोसिएटेड विथ द हाई ह्यूमिडिटी यस और नो मते खाली को इंडिया रो प्रेजेंस ता केते जाईची सेटा मु त मान को कहूछ ठीक अछि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रे नैवेद्य निवेदिता क्लियर एतिके जिंसा क्लियर चलो नेक्स्ट मते कहिबो मते को which of the following factors prevent the cold winds of Central Asia from entering India Central Asia रो इंडिया को कोन cold wind आसिया पई प्रिवेंट आपनकर किए करूची मते किए कहि परिबो like the barriers to Central Asian cold winds कोटा हबो for India कोटा हबो obviously Central Asia रो cold wind आसी पाउनी कोथि पई ना हिमालय पई डेजर्ट पई तो बिल्कुल हुआ डेजर्ट आपनकर लो लाइंग सैंडी रीजन रे प्रेजेंट रहउची कोठी आपनकर ये तो आपनकर वेस्ट साइड रे पड़ेला ये वेस्ट साइड लो लाइंग सैंडी रीजन को पड़ेला देन वेस्टर्न घाट आपनकर कोठी की पड़ेबो टेल मी वेस्टर्न घाट पहले कोठी की पड़ेबो ये तो ब्लॉक माउंटेन कोन ब्लॉक साउथ वेस्ट मॉनसून विंड आपनकर साउथ वेस्ट मॉनसून जते बेले आसे वेस्टर्न घाट ताकू ब्लॉक करे काकू साउथ वेस्ट मॉनसून को and the Deccan plateau ताकू आपण माने कोन करे परिबे ना ये आपनकर साउथ इंडिया रिप्रेजेंट रहउची जे कि आपनकर कोन देयर इज नो रोल ऑफ ब्लॉकिंग द नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल काम ये तो पूरा ऑपोजिट रे साउथ रे रहिला आपनकर आंसर की ना हिमालय क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून प्रोवाइड्स रेनफॉल टू द गैंगेटिक प्लेन के कहि परिबो क्विक रेन शैडो एरिया यस that is the south one मते को monsoon branches and the gangetic plain कोटा हबो राइट आंसर क्विक Which branch of the southwest monsoon provides rainfall to the Gangetic plain? कौन हबो? Gangetic कथा कहूची D आसी जाउची D सीधा पळे आसिला वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन जोगु आपनकर Gangetic plain रे होची केमिति रे छुआ केमिति रे होची the branch of moves over the bay that जे कि पिक आपनकर करची कोन that picks up the moisture and hits the mountain to the northeast side and is a deflected westward कोन westward along with the Himalayan that means हमें कहि परिबा कि that is one and only Bay of Bengal ए केमिति हबो पुनी ए केमिति हबो अरेबियन सी त आपनकर वेस्टर्न घाट रे आपनकर फास्ट यूज हबो हीट आपनकर अरेबियन सी रु जोटा आपनकर हवा आसीबो विंड आसीबो ये आपनकर जाई कि आको वेस्टर्न घाट रे धक्का हबो माड हबो रिफ्लेक्ट करिवो हाँ ना नहीं तो साउथ वेस्ट मॉनसून आपन को पछे प्रोवाइड द रेनफॉल टू द गैंगेटिक प्लेन कोठु आसुची बे ऑफ बंगाल रु आसुची ना आपन वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन रु आसुची सॉरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रु आसुची या फिर बे ऑफ बंगाल रु आसुची ठीक है मुंडा खटा बी हबो तो पक्का तो आउ जदी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे कोन हबो ताले कोन कहि परिबो मेडिटेरेनियन स्टॉर्म को कहि परिबो मेडिटेरेनियन स्टॉर्म को कहि परिबो हाँ ना नहीं मते कुआ मेडिटेरेनियन स्टॉर्म को कहि परिबो यस और नो यस तो वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते कुओ कोन अछि ना मोसिनराम कोन अछि मोसिनराम द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन व्हिच हिल मोसिनराम को कंसीडर करा जायछि दिस इज द वेटेस्ट प्लेस एवर इन द कोन वर्ल्ड तो ये आपनकर को जगह रे अछि मते की कहि परिबो वेयर इट इज प्रेजेंटेड क्विक नॉर्थ वेस्ट रे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पाई रेनफॉल यस हो मते को एबे टिके आसो को हिल को हमें रिलेट करै परिबा क्विक ऑप्शन बी खासी हिल पक्का ओके डन साले खासी हिल को हमें काहे की कहबा काहे की गारो को कहबानी because गारो हेला आपनकर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेघालयन प्लाटू रो गोटे प्लाट तो मेघालयन प्लाटू रो जदी हम रिलेट करेबा जदी क्वेश्चन आपन को मेघालयन प्लाटू कथा पचारि थांता
Okay, we can consider the Garo hill, but this is not the wettest among all. तो खासी हिल को आम कौन कहि पारुचे ना ये आपणकर मसराम एंड आम ताको कहूचे चेरापुंजी आर लोकेटेड are like here because of the hills are shaped like a funnel shape रे थांती. The hills माने को shape रे थांती ना funnel shape रे, just like this. Okay, तो ए जो एरिया टा आपणकर कोन जॉइंट हो जाई छंती. तो ए जो पोर्शन टा आपणकर अछि तो एठी तो सब आपणकर विंटर आपणकर सॉरी रेन वाटर सब तो कवर हेकी रहइबो ना. ए कंडीशन गुडा आपणकर कोन ना वेट कंडीशंस हेकी रहइबो हन नै मते को. यस, चलो नेक्स्ट मते को व्हाई डज द कोरोमंडल कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून. क्विक निवेदिता, मधुस्मिता, Alevents, quick. Good morning, Sushant. मते को ड्राइनेस ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट ताको हमें कौन कहि परिबा is that it is so far from the sea. It lies in the rain shadow area of the western Ghat. It is located in the northern hemisphere. ताहाले हमें कौन करि परिबा the winds blow parallel to the coast. कारण मते एठी कौन लागुची ना राइट बी भी लागुची. It lies in the rain shadow. कोरोमंडल आपनकर rain shadow area of the western Ghat अछि. And the winds blow parallel to the coast. एटा भी आपनकर अछि parallel भी हेई परिबो. So both B and D त मते राइट आंसर लागुची. तम मानु कोन लागुची तम मानु को किंतु C लागुची. मते B and D लागुची तम मानु किंतु पूरा दूर दूर तक C लागुची. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर केमती हबरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो कोरोमंडल लो कुआडे तम माने रिलेट करूचो माडा खाइबो सब. Why does the coromandel coast remain dry during the southwest? Southwest कथा पचारि छिबा हेतरे तम मानकर नॉर्दर्न कुआडे पळै लागिरे आ सी तमर केमिति हबो. नॉर्दर्न हेले पे आपनकर ड्राई पार्ट रहिबो इंडिया. नॉर्दर्न पार्ट हेले हेमिस्फीयर आपनकर कोन पोलर हे जिवो तुंद्रा रीजन हमें कहूचे. तो हेमिस्फीयर आपनकर कोन दिस इज नॉट अ फैक्टर फॉर द रीजनल ड्राइनेस हमें ताको कहबानी होल द ईयर से ड्राई हे कि रहइबो हैला. सो राइट आंसर कोन हबो आपन मानकर राइट आंसर बी को कंसीडर करो हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन चलो. द ब्रेक इन मॉनसून रेफर्स टू द ब्रेक इन मॉनसून दैट रेफर्स टू व्हाट. क्विक break in monsoon हमें कहा को कहि परिबा. This is the end of the rainy season, a period of heavy rainfall for 10 days, a dry spell during the rainy season, or this is the arrival of monsoon in Kerala. Quick यार आंसर मते किए दबो. बुझी पारी बिन्नी मैम बुझी पारी लनी ना पारी बिन्नी आसो थ्योरी क्लास को आसो पेड क्लास को आसो. मते को the end of the rainy season, the period of heavy rainfall for 10 days, or what कौन है परिबा राइट आंसर ना. this is a dry spell during the rainy season. option C. very good मधुस्मिता. कौन हबो ना dry spell during the rainy season. that means end of rainy season कहिला माने हमें कहि पाछु ताको repeat of monsoons माने पुणी आपनकर monsoons आसीबो. end हे गला माने पुणी next year आसीबो ना. end कोन गोटे जिंस heavy rainfall for 10 days एटा को हमें कोन कहि परिबा. यदि heavy rainfall होउछ हमें कहजे वृष्टिपात होउछ ताको हमें burst word देई परिबा. break in monsoon कहउची माने कोन break in monsoon कहउची माने कोन ना this is a dry spell. what does it mean ना monsoon month जोटा कि जून रु सितंबर हमें जानि छे. these are the periods of one or more weeks when it doesn't rain at all. है ना नहीं आपनकर मझिरे मझिरे ब्रेक हे जाय जोटा हमें कहउचे monsoon trough बोली. monsoon आपनकर ट्र कहउचे हमें जानि छे क्रेस्ट एंड ट्र जोटी अप्स एंड डाउन हुए गोटे पिक को जाए ताको हमें क्रेस्ट कहिबा देन गोटे डाउन को आसे ताको हमें ट्र कहिबा. सो ट्र टा होउचे आपनकर कोन द ब्रेक इन monsoon हैला. नेक्स्ट मते को व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द फास्ट monsoon रेनफॉल इन समर. समर रे को इंडिया रे को पार्ट जे कि फास्ट monsoon आपनकर फील करे. क्विक जल्दी सुनील, मधुस्मिता, निवेदिता, सुशांत. आंसर मालाबार. मालाबार आपनकर फास्ट monsoon माने आपनकर कोन मालाबार कोस्ट करिवो. वेरी गुड. सो वेस्टर्न घाट रो मालाबार वेस्टर्न घाट थिबो जदी राइट आंसर मारिबो. मालाबार कोस्ट जदी भी अछि राइट आंसर मारिबो. सो हिमालय कहिले आपण माने जानि संती रिसीव करूची रेन मच लेटर यूजुअली आपनकर जून एंड जुलाई रे हिमालय रे रेन हुए. ईस्टर्न घाट तो हबनी बिकॉज़ ईस्टर्न घाट भी आपनकर कोन रिसीव लेस रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट monsoon आपनकर कोन वेस्टर्न साइड रो आसी के एक्वायर करे.
नेक्स्ट मते कुह द हॉट एंड ड्राई winds, the hot and dry winds blowing in the northern plains, the hot and dry winds blowing in the northern plain ताको हमें कहा सहित रिलेट करूछ क्विक the hot and dry winds blowing in the northern plains during summer are known as what ताको हमें कौन कहूचे hot and dry कहूने कौन लू यस काला बैसाखी हे गला ताको लू है कि काला बैसाखी हे गला काला बैसाखी कोडे होबरे द वेस्ट बेंगल एंड ओडिसा रे हेले ताको हमें कहूचे थंडरस्टॉर्म द वायोलेंट थंडरस्टॉर्म इन ओडिसा एंड वेस्ट बेंगल ताको हमें कहूचे काला बैसाखी हैला हॉट एंड ड्राई विंड्स को हमें लू कहूचे काला बैसाखी कह जाउछ कोडे हां क्लियर चलो नेक्स्ट मते को मैंगो शावर्स आर कॉमन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैंगो शावर आपनकर कॉमन को फॉलोइंग स्टेट्स रे मते की कहि परिबो क्विक जल्दी व्हाट डू यू मीन बाय द मैंगो शावर्स गाइस मैंगो शावर्स माने कोन कहूचो अरे जल्दी आंब पाछि जीवो माने सेटा गोटे शावर्स आपनकर आसे प्री मॉनसून शावर हमें ताको कहूचे मैंगो शावर इज नथिंग बट ए प्री मॉनसून शावर जोटा कि आंब पाचिबा पई हेल्प करे हला सो ये आपनकर कोठी ना केरला एंड कर्नाटक कोठी ऑप्शन सी हां की पंजाब एंड हरियाणा रे हेतिला मनोज काम बिल्कुल करनी गोटी आंसर दियो चुपचाप ही बसो 50 थर आंसर दियोनी मनोज टाइम आउट लगे देबी नले गोटे थर आंसर दबो चुप ही बसिबो पंजाब एंड हरियाणा दीज आर द स्टेट एक्सपीरियंस करछु वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हमें कहि परिबा कोन ना लू एक्सपीरियंस करछु बट दिस इज नॉट द मेन रीजन आपनकर कोन हबो ना वेस्ट बेंगल एंड आसाम ताकू भी आपण मान जानि संदी काला बैसाखी आसी जाउछु वेस्ट बेंगल कहले आसाम कहले आपण मान जानि संदी कोन ना बरदोई शिला कोन बरदोई शिला आपनकर आसाम रे आसे जेमिति काला बैसाखी जेमिति लू सेमिति बरदोई शिला एट आसाम राइट आंसर कोन केरला एंड कर्नाटक हैला नेक्स्ट मते को लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म इन वेस्ट बेंगल ड्यूरिंग द समर आर कॉल्ड एबे कुह वेस्ट बेंगल कथा त मन को कहिची एबे कुह वेस्ट बेंगल आसाम काला बैसाखी वेस्ट बेंगल आसाम सहित काला बैसाखी नहीं आसाम रे आपण माने बरदोई शिला को रिलेट करिवे एठी आपण को रीजनल स्टॉर्म कथा पचारिछि एठी आपण माने वेस्ट बेंगल ओडिसा सहित रिलेट करिवे काला बैसाखी आम ओडिसा रे कोन आसे काला बैसाखी आसे बरदोई शिला इज द लोकल नेम ऑफ दिस समर एंड हमें कहि परिबा सेम हमर समर रे जो थंडरस्टॉर्म आसे जोटा को हमें काला बैसाखी कहूचे सेटा आसाम रे ताको कोन कह जाउची ना बरदोई शिला एटा को हमें आसाम रे कहूचे हैला आ चेरी ब्लॉसम्स कहले कोन प्री मॉनसून आपण मान देखि चंदी जेमति कि प्री मॉनसून ताकू हमर केरला कर्नाटक रे हमें कहूचे मैंगो शावर सेमिति प्री मॉनसून शावर को कोठी ना कर्नाटक रे हमें कहूचे चेरी ब्लॉसम्स कर्नाटक रे चेरी ब्लॉसम्स ताकू कह जाउची तो कॉफी शावर से ले आपण मानकर कोठी पळेबो जोटी कॉफी थिबो सेठी हमें पळेबा दैट मींस ए कोन टोटल साउथ इंडिया रे हेथिबो अनदर नेम फॉर द साउथ इंडिया ताको हमें रिलेट करई परिबा नेक्स्ट मते को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपनकर ओरिजिन कोठु होची क्विक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपनकर ओरिजिन कोठु होची ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज क्विक के आंसर दबो मेडिटेरेनियन सी कहिथिली मु तमानकु मेडिटेरेनियन सी ही हबो राइट आंसर अरेबियन सी बे ऑफ बेंगल कैस्पियन सी आपको आपण रिलेट करिवे नै दीज आर द सोर्सेस ऑफ द समर मॉनसून नॉट द विंटर डिस्टर्बेंस हेलो नेक्स्ट मते को व्हिच क्रॉप इज मोस्ट बेनिफिटेड बाय विंटर रेनफॉल कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्विक कोन हबो राइट आंसर माने एग्रीकल्चर ऊपर कोन इंपैक्ट पडुछि सेटा आपण पचाछि दैट मींस कोन ना रबी क्रॉप्स जे हेथिबो सो हमें राइट आंसर कोन ना व्हीट को मारी परिबा पुणी ए मारिच व्हीट को मारिबो ना तुम माने व्हीट को मारिबो राइस हला आपनकर खरीफ क्रॉप कोन नहीं रबी क्रॉप आपन ओली रहला व्हीट विंटर रेन ताकू निहाती दरकार हुए
नोन एज हमर कोन लोकली राजस्थान ने ताको महावात बोली कहा जाय व्हीट को लोकली राजस्थान ने महावात बोली कहा जाय गोल्डन ड्रॉप्स बोली ताको कहा जाय जते बेले आपनकर कोन ना व्हीट पई आपनकर प्री मानसून प्री रेन हुए ताको हमर कोन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पई ताको महावात बोली कहा जाय हला महावात करिच अरे महावात करिच तो एटा से महावात कहा जाय राजस्थान नेक्स्ट सो ओडिशा टीचिंग एग्जामिनेशन पय जदि आपण माने प्रिपरेशन करछन्ती एसएसबी टीजीटी द्रोण बैच आपण माने एनरोल करि परिबे जेटीईटी पय प्रारंभ बैच नै परिबे एसएसबी टीजीटी संस्कृत भी स्पेशल पेड कोर्स अवेलेबल अछि नेक्स्ट वन देखो अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन द एएमडब्ल्यू टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन कहिथिली एएमडब्ल्यू कहिले त माने कोन रिलेट करै परिबो एएमडब्ल्यू कहिला माने कोन रिलेट करै परिबो मते खाली को W MW M for monsoon है ना नहीं तो monsoon W माने कौन ना short dry season में थिबो तो AMW आपनकर short dry season रे की आसी परिबो ना west coast India western coast of India आपनकर आसी परिबो C आसी गला एई तो एई मो नाटा को रखिबो C रे कोन आसी देखि north east India आपनकर CWG north east India CWG रे आसीबो करमंडल तो आपनकर AS रे आसीबो कहिथिली करमंडल आपनकर एस जोटा कि ट्रॉपिकल साबना विथ ड्राई समर आसीबो थर्ड डेजर्ट पे आपनकर बी थर्ड डेजर्ट आपनकर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू रे आसीबो थर्ड डेजर्ट जोटा कि हॉट डेजर्ट रे कंसीडर करासे क्लियर बुझा पड़ला नेक्स्ट चलो मते को द क्लाइमेट ऑफ द ले लद्दाख रीजन इज क्लासिफाइड एज ले लद्दाख रीजन माने एक्सट्रीमली आपनकर कोन कोल्ड रीजन है ना नहीं तो ये आपनकर को टाइप ट्रॉपिकल साबना ता आसीबनी एडब्ल्यू कहतली ट्रॉपिकल साबना पई है ना तो याको एलिमिनेट करि दियो तुंद्रा टाइप पोला टाइप कोल्ड डेजर्ट टाइप कोन हबो मते कहले तीनटा का आंसर क्विक डी कोल्ड डेजर्ट टाइप वेरी गुड तमाने ही मो नाटा को पूरा आगु को नबो एटे तो कहिची कोपेन्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग क्लाइमेट ऑफ द ले लद्दाख रीजन क्लासिफाइड हेची माने कोन कोपेन्स अकॉर्डिंग कोठी आपण मानकर डेजर्ट टाइप मेंशन हेची कोपेन्स अकॉर्डिंग आपनकर लेटर वाइज मेंशन हेची तो गोटिए लेटर लिखा हेची पोलर टाइप ई बोली तापर भी तम मानकर मुंडो काई खटुची एठी पे मार्क करा देछि ई बोली यदि ई नथांदा ताहाले हमें कंसीडर करथांदे ना क्वेश्चन भी देखु न कोड सब आछरे देखो which state receives the highest rainfall from the northeast monsoon को स्टेट आपनकर नॉर्थ ईस्ट मानसून रो हाई रेनफॉल एक्सपीरियंस करूची क्विकली को मनोज तो खाली ओवर कॉन्फिडेंट है कि आंसर देला और कोन करबी मथि मनोज खाली ओवर कॉन्फिडेंट है कि आंसर मारुची केरला मारलेनी आसी कि पुणी चंद्रशेखर केरला केमती हबो मते नै कहिलो केरला काहे कि हबो केरला आपनकर रिसीव करूची रेन mainly from the south west monsoon एठे north east कहिची केरला कहिले south west monsoon रु आपनकर कोन एक्सपीरियंस करूची राइट आंसर कोड हबो तमिलनाडु हबो राइट आंसर तमिलनाडु हबो वेस्ट बंगाल आपनकर बे ऑफ बंगाल रु नोची receives the rain from the bay of bengal that is branch in the summer तमिलनाडु रो अक्टोबर रो नवंबर रे आपनकर आसुची ओतरे विंड पूरा पिक अप रे थाई मॉइस्चर आपनकर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रु नै कि आसी कि कोरोमंडल कोस्ट को आने मेकिंग द प्राइमरी रीजन फॉर द सीजन दैट इज द कोन हाईएस्ट रेनफॉल आपनकर थाए तमिलनाडु रे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून पई हां रिट्रेट मानसून यस रिट्रेट मानसून तक हमें कहि परिबा कोन कुआड चंद्रशेखर आज आंसर मरा होजी नेक्स्ट मते को द ड्यूरनल रेंज ऑफ टेंपरेचर इज हाईएस्ट इन द ड्यूरनल रेंज ऑफ टेंपरेचर हाईएस्ट है कि थाए कोठी क्विक आंसर देला देखी ड्यूरनल माने कोन अरे ड्यूरनल माने कोन ए जो ड्यूरनल लिखा है ता माने कोन किछि गोटा रॉकेट साइंस नहीं ता माने होची दिल्ली हला द दिल्ली रेंज ऑफ टेंपरेचर इज हाईएस्ट इन कोठी थाए ऑन एंड एवरेज पचार जाउची कोठी आपनकर रहइबो थर्ड डेजर्ट जोठी आपनकर अछि जैसलमेर हन नहीं तो मुंबई हेले आपण माने कोन कहि परिबे ये आपनकर इक्वेबल क्लाइमेट रहउची स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट इक्वेबल क्लाइमेट कहिले मुंबई को आपण माने रिलेट करि परिबे हाईएस्ट डोनाल रेंज कहिले ओनली obviously मरुभूमि रे कोन चलो नेक्स्ट मते को एल नीनो जनरली हैज व्हाट इफेक्ट ऑन द इंडियन मानसून रे आपण माने जानसंती एल नीनो इफेक्ट तो जो एल नीनो इफेक्ट आपनकर अछि से आपनकर एग्जैक्टली करे कोन के मते कहि परिबो एल नीनो इफेक्ट आपनकर एग्जैक्टली करे कोन
आंसर दियो एल नीनो इफेक्ट ये कौन करिवो ना रेनफॉल को डिले करोछि दैट मींस कॉज हेवी फ्लड ये तो डिले करेबो कॉज केमती करिवो लीड्स टू द डेफिशिएंट ऑफ रेनफॉल डिले करोछि माने डेफिशिएंट होछि ड्रॉट आसी जाई पारे एंड हैज नो इफेक्ट ब्रिंग अर्ली मानसून तो आसीबो नै तार ऑपोजिट होछि डिले करेबो ये क्लियर एते कि जिंसा बुझा पड़ला एलिनो कहले कोन कहछो लानिना जदि हेवी फ्लड्स कोड आसीबो ताको हमें लानिना को कहबा एलिनो रो ऑपोजिट होछि आपनकर लानिना हेवी फ्लड आपनकर कोथि पय आसीबो ना लानिना पय आसीबो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द एलिनो एते कि जिंसा क्लियर वार्म ओशन करंट ओके क्लियर चला नेक्स्ट मते को व्हाई इज मुंबई वार्मर देन दिल्ली इन विंटर विंटर रे मुंबई बेसी वार्मर थाए देन दिल्ली कोथि पय थिबो मते कहिलो कोथि पय थिबो मते खाली को बिकॉज़ ऑफ द टेंपरेचर डिफरेंस नियाती हेथिबो दिस इज द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली but due to its lower altitude can be a reason altitude the elevation can be a reason of the temperature difference but still एटा हमर कोन high hill low hill कथा कहनी हम temperature difference को जिबा ता माने हम राइट आंसर एठी कोन मारिबा ना that is nothing but the due to the moderating influence of the sea मुंबई पाखरे ocean माने अपन sea connected अछि but दिल्ली आपनकर inland रहि गला हना नहीं ऑप्शन बी मधुस्मिता ए आडू को काहे कि मुंड जाउचिलो अल्टीट्यूड कथा काहे कि मुंड को जाउची टेंपरेचर डिफरेंस देखि कि अल्टीट्यूड कथा माने पडुची नेक्स्ट मते को व्हिच माउंटेन रेंज एक्ट एज अ बैरियर टू मॉइस्चर लेडन विंड्स इन राजस्थान मॉइस्चर लेडन विंड आपनकर राजस्थान रे अछि बिकॉज़ ऑफ द मरुभूमि हना नहीं बट मते को ड्यू टू व्हाट एरिडिटी कथा पचरी छी एठी कोन ना व्हिच माउंटेन रेंज एक्ट एज अ बैरियर टू मॉइस्चर लेडन विंड्स ऑफ राजस्थान मॉइस्चर कंटेन करूची माने एरिडिटी होना नहीं तो एरिडिटी इन राजस्थान आसुची कहा पाई मते को वन एंड ओनली को रेंज अछि आरावली रेंज आपनकर अछि होना नहीं विंध्य सातपुरा रेंज ले हमें जानचे कोन विंध्य कोठी रे विंध्य आपनकर कोठी अछि सातपुरा कोठी अछि विंध्य आपनकर मध्य प्रदेश सातपुरा गुजरात को रिलेट करेबा आरावली आपनकर पैरेलल हेकि अछि अरेबियन सी सहित मानसून विंड आसुची सो हम ताको रिलेट करि परिबा राजस्थान से एते की जिंस क्लियर और नॉट मते खाली को यस और नो नीलगिरी तो आपण मान जानि सथि साउथ इंडिया तमिलनाडु केरला कनेक्ट हेछि नीलगिरी द्वारा मीटिंग प्लेस होना नहीं ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट और मीटिंग प्लेस हमें नीलगिरी को रिलेट करे पारुछे क्लियर नेक्स्ट चलो मते को द मैंगो सावर्स आर आल्सो नोन एज व्हाट इन कर्नाटक रे आउ को सावर तमन को रिलेट करिथिली टी सावर्स आपनकर आसाम रे आसियो चा जोठी टी सावर्स एठी त टी सावर कोठी करतिली ना आसाम रे रिलेट करबो टी सावर्स यदि चेरी ब्लूजम्स कहतिली ताको त माने कोठी रिलेट करैथिलो चेरी ब्लूजम्स these rains are crucial for the blooming of coffee flowers that means relate करेबा कर्नाटक रा कॉफी चेरी ब्लूजम सहित ओके ब्लू कहले हमें कोन कहि परिबा ना ई आपनकर डिस्कस हमें करिथिले these are the hot and summer wind of the north india काला बैसाखी हेले आपनकर ओडिसा एंड वेस्ट बंगाल को रिलेट करे परिबे समर थंडरस्टॉर्म को हमें रिलेट करूछे नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून कोन हे परिबो क्विक चेरी ब्लूजम वेरी गुड नेक्स्ट मते को द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मॉनसून ऑनसेट कोन हे परिबो प्रेजेंस ऑफ द मून हे परिबो की और डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर शिफ्ट ऑफ द आईटीसीजेड आपनकर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुए लो प्रेशर बेल्ट रे यार किछ रिलेशन अछि की नाही जेट स्ट्रीम तार किछ रिलेशन नाही तो हमें प्रेजेंस ऑफ द मून को कहि परिबा काहे कि हमें प्रेजेंस ऑफ द मून को कंसीडर करछे अमंग ऑल द ऑप्शंस because we know the moon affect करे कहा को ना टाइड्स ऑफ द ओशन को आपण मान देखिथिबे पूर्णिमा जो दिन थिबो ओशन नो टाइड आपनकर केते जोरे आसुथबो and it has no significant role in the atmospheric presence that means onset of the monsoon रो या सहित किछि रिलेशन ना clear next question अरे आईटीसीजेड जाननो इंडियन टाइम जोन जानिनो आईटीसीजेड हां नेक्स्ट चलो the ITCZ shift to which region in July quick ITCZ आपनकर शिफ्ट करूची कोउटा को जुलाई रे क्विक करा कोन क्लास सरुनी आज पूरा थक्का लागिलानी मते डे आरंभ रु
प्रिंस मैम आईटीसीजे टिके कहि दियंतु अरे दिस इज द इंटरट्रॉपिकल कवरिंग जोन आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कवरिंग जोन ITCZ ये आपनकर कौन करे इन द प्रेजेंस इट इज अ लो प्रेशर बेल्ट जे एनसर्कल करके रखे इक्वेटर को व्हाइल आमे कहि परिबा ट्रेड विंड्स फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर जोटी गोटे जगह रे आसी कि मीट करंती जहा को आमे कोन कहूचे ना डोल्ड्रम बोली कहूचे जहा को आमे डोल्ड्रम बोली कहूचे ओके हां बट हियर कोन कहिची ना इक्वेटर गंगा प्ले आपनकर गंगा प्लेन इंडियन ओशन तिब्बत प्लेट्यू कोन हबा राइट आंसर ऑब्वियसली कोन हे परिबो इक्वेटर तो हबनी वेयर आईटीसीजेड इट्स नॉर्मली हो ना नहीं बट इट शिफ्ट करके रहउची नॉर्थ ड्यूरिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सो हमें रिलेट करे परिबा गंगा प्लेन को व्हाई बिकॉज़ इन जुलाई द आईटीसीजेड जोटा कि थर्मल इक्वेटर बोली हमें कंसीडर करूछे इ शिफ्ट करके रखे अबाउट 20 डिग्री टू 25 डिग्री हैला ताको माने सर्कल करके रखे so Ganga plain often called as the monsoon trough next mate ko which city has an equable climate आपनकर को सिटी को हमें कंसीडर करूछे क्विकली कुह इक्वेबल जोटा को हमें मैरीटाइम बोली जानी छे इक्वेटेबल क्लाइमेट और मैरीटाइम क्लाइमेट हमें कंसीडर करूछे व्हाट विल बी द राइट आंसर क्विक कौन हबो बी केमिति करे बी नागपुर अच्छी बी रे नागपुर अच्छी दिल्ली नागपुर अमृतसर ए सबूर आपनकर इंटीरियर लैंड लॉक्ड सिटी गधस्थल दिल्ली हेला नागपुर हेला अमृतसर हेला माने सब तो आपनकर लैंड लॉक्ड वाला सिटी हे गले याकू आपण माने केमिति रिलेट करूचंती गोटिए तो केरला रे कोची आपनकर रहिला ताकू आपण माने कोन eliminate kari paribe equable climate सहित that means there is a very little difference between the summer and the winter temperature due to the sea presence over there हना नहीं टिके तो मुंडो खटो ना ओ केते त मानको मु खटो मुंडेबी आस most of india's rainfall आपनकर को टाइप रो थाए मते को cyclonic that is the convectional orographic frontal कोन हबो मते को cyclonic माने कोन मते कहिलो cyclonic माने जोटा कि कॉमन थिबो कोस्टल एरियाज रे ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मॉनसून बट दिस इज नॉट द प्राइमरी सोर्स फॉर होल द कंट्री ये तो ओनली आपनकर कोन कोस्टल सहित आपनकर जेते बेले साइक्लोन आसे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कोस्टल स्टेट मानकू हिट करे होना नहीं से कोन टोटल कंट्री को हिट करे कि तो आपको हम एलिमिनेट कर देबा देन रहिला कन्वेक्शनल व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वेक्शनल मते के कहि परिबो ना ये आपनकर समर आफ्टरनून रे आसे लाइक इन द इक्वेटर भलिया ये भी काम करे एंड आपनकर आफ्टरनून ऑफ द समर सीजन रे आपनकर कन्वेक्शनल एयर फ्लो हुए ओरोग्राफी कहले कोन बुझछ ना ये हो जे आपनकर रिलीफ मोस्ट ऑफ द इंडियन रेन ऑकर्स वेयर द मॉइस्चर लैडन करके रखंती विंड्स को एंड फोर्स टू राइज ओवर द माउंटेन्स दैट मींस वेस्टर्न घाट हेला हिमालयस हेला गारो खासी हिल हेला ए ऊपर आपनकर ट्राई करंती That's why ताको हमें orographic region बोली कहूँ फ्रंटल आपनकर यूरोप यूएसए ये आपनकर यूरोप रे यूएसए रे हला orographic हला इंडिया नेक्स्ट वन देखो द retreating monsoon season occurs during the retreating monsoon study of mountain is the orography yes orographic नहीं orography को मते जल्दी retreating monsoon कौन हबो अक्टोबर टू नवंबर वेरी गुड कौन कहूँ अक्टोबर टू नवंबर आपनकर जते बेले सन मूव करंती टुवर्ड्स द साउथ एंड हमें जानि जे देयर इज अ हाई प्रेशर बिल्ड्स ओवर द लैंड्स एंड पुशिंग द विंड्स बैक टुवर्ड द सी आर थ्रू आपनकर सरफेस रु सी आडू को पुश बैक करिवो एयर हैला एंड डिसेंबर टू फेब्रुअरी आपन मन जानि सथि कोल्ड वेदर आसीबो विंटर सीजन आसीबो मार्च टू मे आपनकर समर आसीबो Next what about tropical cyclones in India are most frequent in tropical cyclone in India are most frequent को जगह रे हबो इंडिया कथा कहिछि माने हम रिलेट कहा सहित करि परिबा Arabian Sea रे cyclones occurs here but are less frequent than the usual कोन Indian Ocean मारिबे ना Bay of Bengal काहेकि why हमें Indian Ocean चूज करिबानी Bay of Bengal आपण मान जानि सथि को टाइप रा Bay of Bengal ओडिसा को हिट करू साइक्लोन प्रोन स्टेट भाबरे ओडिसा नंबर 1 रे अछि
हाँ ना नहीं? So Bay of Bengal, due to the higher sea surface temperature and the shape of the coastline, this region sees the most frequent and intense tropical cyclones in India. That's why we can choose Bay of Bengal instead of the Indian Ocean. Clear? चलो Indian Ocean ना कौन? Bay of Bengal तो Indian Ocean ना part ना? चलो technically Bay of Bengal is a part of the Indian Ocean. Next मते को Drass is located. अरे Drass कौन गिरी? ये मते कहि परिबो Drass कौन आपनकर? Quick. What do you mean by Drass? Drass माने कौन? जोटा कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर प्रेजेंट अछि. Drass एरिया आपनकर कारगिल डिस्ट्रिक्ट रे प्रेजेंट अछि. That means ये आपनकर लद्दाख रे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ए सबु नाही. So Drass is located in the Kargil district of Ladakh. It is famous as the gateway of Ladakh, and temperature can drop to -45 degree also. -45 पर्यंत आपनकर temperature drop हेई पारे. Sikkim टा cold, but Drass holds the record for the lowest inhabited temperature as of now. Okay, एते की जिनसा clear? Clear? तो आज आपण मानकु कोन मु कहिली कोन आपण माने आज पढिले मते खाली कहि देला. इंडिया रा क्लाइमेट को आपण को एक्सप्लेन कली. ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप आपण माने पढिले. यस और नो मते खाली कहि दियो. फर्स्ट थिंग इंडिया रा क्लाइमेट को हमें पढिले. ट्रॉपिकल केमिति कहू जे ट्रॉपिकल मॉनसून. ट्रॉपिकल कोथि पई ना बिकॉज़ इंडिया इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सेथि लागि ताकू कोन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक मिसै कि ट्रॉपिकल कर दिया गला. So tropic of cancer अच्छी and equator भी अच्छी. So tropical है गला. It says माने कौन total वर्ष सारा warm आपन कर रुहे. warm आपन कर year round. Then जो देमे कहा monsoon कोथि पई tropical monsoon है. monsoon कोथि पई ना monsoon आपन कर Arabic word कहिली derive हेची कोथुरु ना मौसिम रु derived हेची. That means आपन कर season कहिली and ये refer करछि काहा को ना seasonal reversal of winds को. यदि समर कथा कहली ताले कोन ना winds blow हबो समर रे सी टू लैंड को. एटा कहली ना नै मते कुआ कहूची प्रिंस रुआ कहूची मोटे मने पका कोन कोन त मानको आज पढेली स्टार्टिंग रे पर्यंत. तो समर रे कोन कहली ना winds blow करूची फ्रॉम सी टू लैंड को जोटा को हमें करूचे कैरी से करूची मॉइस्चर. विंटर कहले कोन से winds blow करूची फ्रॉम लैंड टू सी जोटा कि ड्राई एंड कूल कंडीशंस. ओके जदि फोर पिलर्स हमें कहूचे कोन कोन कहली जोटा फैक्टर अफेक्ट करूची इंडिया रा क्लाइमेट को. ताहाले हिमालय गोटे, ओशन गोटे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गोटे एंड आपन करा गोटे कोन अल्टीट्यूड और रिलीफ हमें ताकू कहूचे. ए चारटा जिंस आपन मानन को कहि. जदि हमें कहबा फोर इंडियन सीजन्स कोन कोन आसुची. कोल्ड वेदर गोटे आसुची जोटा डिसेंबर रु फेब्रुअरी भीतर फील होची. गोटे हॉट विंटर मार्च रु मे भीतर फील होची. गोटे एडवांसिंग मॉनसून जोटा कि जून रु सितंबर भीतर फील होची. आ गोटे रिट्रीटिंग मॉनसून जोटा कि अक्टोबर रु नवेम्बर. ये होची चारिटा माने नै. उधरे अक्टोबर रे हिट करे कोन रेन तमिलनाडु कोस्ट करमंडल कोस्ट सहित रिलेट करथि. एंड जदि पछारा गला आईटीसीजेड. व्हाट इज आईटीसीजेड मते कुआ. आईटीसीजेड जदि पछारा गला कहिली त माने जदि पछारथिलो आईटीसीजेड कोन कहूची ना लो प्रेशर बेल्ट दैट मूव्स द नॉर्दर्न एंड इन समर एंड पुल्स द मॉनसून winds towards India. रेन शैडो जोन कहले कोन बुझिलो ना द ड्राई साइड ऑफ द माउंटेन जोटा का हमें कहि पाछे द ईस्टर्न साइड एंड द वेस्टर्न घाट को हमें कहूचे ड्राई साइड ऑफ द मॉनसून. ताको हमें रिलेट करूचे. ओरोग्राफिक रेन कहले कोन बुझो ना रेन कॉज्ड बाय माउंटेन फोर्सिंग एयर टू राइज. ताको हमें ओरोग्राफिक रेन कहूचे. माउंटेन नु रिलेट करिवो. माउंटेन नु जो रेन आसुची ओरोग्राफिक रेन. और रहिला आपनकर ड्यूनाल कहितली त मानकु जोटा को ड्यूनाल मींस कोन ना डेली. ड्यूनाल रेंज कहले दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेली मैक्सिमम एंड द डेली मिनिमम टेंपरेचर. दैट मींस द हाईएस्ट जोटा रहउची कोडी डेजर्ट रे, लोएस्ट रहउची कोडी तुंद्रा एरिया रे, कोल्ड एरिया रे. एते की जिंस आपण मानकु रिलेट आज करैछि. एते की जिंस त मानकु मने रखैछि. बाकी कोन जदी छाडी दैछि त माने टिके रिलेट करै दबो. ठीक अछि. और किछि डाउट रहिला मते पछारो. तो अगेन कहूची जदि आपण माने टीचिंग एग्जामिनेशन बाय प्रिपेयर करूसंती ताले एसएसबी टीजीटी द्रोण बैच नहीं परिबे. जेटीएटी प्रारंभ बैच नहीं परिबे. संस्कृत स्पेशल पेड कोर्स भी अवेलेबल अछि. इट इज द हेल्पलाइन नंबर गाइस.
कॉल करिवे जदि आपण माने सिविल सर्विस पे भी प्रिपरेशन करूछंती को बैच नेबा को चाहउछंती हियर इज हेल्पलाइन नंबर कॉल करि परिबे जदि वन डे एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करूछंती महापैक नै परिबे 4000 2 इयर्स वैलिडिटी भितरे जेते वन डे एग्जामिनेशन 2 वर्ष भितरे आपनकर आसीबो आपण माने एई महापैक अंडरिंग कवर अप होबो सबुथरे आपनकर सिलेबस एवरीथिंग कवर अप हो हैला so that's it Vedang teaching classes telegram channel join हे जिवो so that मु एठी तमन को क्लास रो पीडीएफ शेयर करि पारिबे ठीक अछि मु एटा क्लास को एबे आसिलो तमे Oh, चलो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे बाय बाय टेक केयर पीवाईक्यू सीरीज चली छी राति रे देखा हबो तमनक सहित खाली बहुत संख्या रे पिला थिले आपण माने आसंत राति क्लास रे जॉइन हुंतु एंड पीवाईक्यू को टाइप रो सीजीएल एग्जामिनेशन रे पढी थिला 2022 रो काली थिला आज थिला आज अछि 2023 मसिया रो ताकू चेक करबा आज क्लास रे ठीक अछि क्लास रे पूरा प्रेजेंट चल बाय बाय